अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग बढ़िया होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो आज है 17 दिसंबर 2022। आज की डेट पे मैं ये वीडियो जो है शूट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको अपलोड करूंगा 23 या 24 दिसंबर को, क्योंकि ये वीडियो जो है स्पेशल बनाई गई है 25 जो दिसंबर होता है उसके लिए। क्योंकि उस दिन आप सब लोगों को पता है कि वर्ल्ड वाइड हॉलीडे होती है, क्योंकि उस दिन जो है क्रिसमस होता है। तो इस क्रिसमस के दिन हम लोग कौन से गुनाह करते हैं और हम किस तरह से इन गुनाहों से बचेंगे, तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूं या कुछ ऐसा वैसा जिस मतलब मैं खुद ही आप लोगों को फतवा दे दूं या कुछ आप लोग ये गलत कर रहे हो, लेकिन मैंने एक वीडियो क्लिप उठाई है तो जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं। तो अल्लाह ताला इन हजरत को भी सलामत रखे, क्योंकि इन्होंने लाखों लोगों को जो है अपनी स्पीच के थ्रू या जितने भी इनके जो इवेंट्स होते हैं उनके थ्रू उन्होंने लाखों लोगों को जो है मुसलमान कर दिया है। तो मैं आपके सामने वीडियो क्लिप पेश करता हूं, उसके बाद हम थोड़ी आगे बात भी करेंगे। तो उससे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की वीडियो जो है एंड तक जरूर और लाइक शेयर तो आज बनता ही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हम सब लोग गुनाहों से बचेंगे, तो मेहरबानी करके वीडियो को लास्ट तक देखना और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं, चलो आप लोग भी देखते हैं और मैं भी देखता हूँ साथ साथ में। Assalamu alaikum. My name is Adil Ahmed. I'm a 16-year-old student doing my GCSEs. And my question regards Dr. Naik's statement previously about saying Merry Christmas to a non-Muslim makes us somehow submit the fact that, well, the idea that Christ was the Son of God, and it makes us one of बहुत ही them. ध्यान से वीडियो Now, देखनी है भाई, that बहुत ही sort of ध्यान। shocked me in a sense that surely Allah in His almightiness would know that my intention to saying to someone Merry Christmas is, as you said, just to improve relations. Now, the thing is that most people, at least of my generation, the people who I come in contact with, don't actually celebrate Christmas because they celebrate Christ's birth, but actually it's a commercial thing to get the latest PS2 or whatever it is. So could you just please expand on that? Because I'm sort of confused how saying Merry Christmas could somehow bring blasphemy. ये अभी जवाब सुनना, बहुत ही जबरदस्त to जवाब wish Merry Christmas to his देने वाले friend डॉक्टर so that he साहब। can build relationships. So tomorrow he'll ask me the question, why can't I have a peg of alcohol to build relationship? जवाब बहुत, Why not? जवाब सुनिए। Why? What's wrong? Why can't I eat some pork with them? Why can't I go to church and worship Jesus Christ, peace be upon him? See, you don't have to do anything haram for doing सही, dawah. बिल्कुल सही। For reaching the goals, you cannot use wrong means, brother. What is haram for them is haram for you also. When you are wishing Merry Christmas to them, you are agreeing that Jesus Christ, peace be upon him, was born on the 25th of December, and you are agreeing that he is the begotten Son of God, which is shirk. अस्तगफिरुल्लाह। Why it is wrong? देखा, मैंने बोला था आपको Because कि ये the हम लोग शिर्क Christians, के नजदीक भी जा they सकते हैं, believe तो that ये शिर्क Jesus ही है। Christ, peace be upon him, is the begotten Son of God. Now, irrespective whether he may be a practicing Christian or not, they celebrate because it's the birthday. Why don't they celebrate any other day? So if you tell your Christian friend, okay, forget, if you don't believe in that, let's celebrate instead of 25th of December, let's celebrate on the 10th of October. Will they agree? They'll say no. But that does not mean don't do dawah. I do dawah on Christmas. I ask them that this is the Christmas season. Why is it Christmas? So they tell me, oh, it's Christmas because Jesus Christ, peace be upon him, was born on 25th of December. Who is this Jesus, peace be upon him? Oh, Jesus is the begotten Son of God. Then I tell him that can you prove to me from one unequivocal statement from the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that he's God over, he says, worship me. I do dawah. Why do you have to use wrong means for doing dawah? That's why he is Zakir Naik. Love you, sir. You ask the question, is saying Merry Christmas wrong means? I'm telling you it is wrong. Okay. 100% wrong according to me. If you don't know what Christmas is celebrated for, like by mistake, if you don't know it is alcohol and you think it is Pepsi and you have it, Allah may forgive you. So if you don't know what is Christmas standing for being in UK, do you know what Christmas stands for? Well, as of now, Or I have you think, come from somewhere outside? well, as of now, I think it stands for a Do you know- commercial. अगर हम गलती से I कोई think it गुनाह stands for a commercial business. गलती से That's हो what it जाता है stands हमसे for. कोई It गुनाह, stands तो for a उसका commercial business. शायद Yeah, अल्लाह ताला place माफ कर where देगा। people give लेकिन each other अभी presents. आप लोगों ने What is the आप लोगों ने excuse? जाना कि ये Don't- बहुत ही बड़ा It's गुनाह a है, holiday. तो भी आगे बात I'm करेंगे asking the और question, do you know what is the excuse for commercial business? What is the excuse? Why do they celebrate Christmas? For what? Because it's the birth of Christ. That finish. You know about it? And do they consider Jesus Christ, peace be upon him, as the Son of God, begotten Son? Do you know that? Yeah, I know that, If but you know that,
and then if you wish Merry Christmas, it is haram. Allahu Akbar. If you didn't know, if you're coming from Timbuktu, if you're coming from Timbuktu and you did not know, and in ignorance if you wish, Allah may forgive you. If you don't know that that is alcohol, and if you think it is Pepsi and you drink it, Allah may forgive you. But if you know it and you think you're building relationship, you know what you're doing? You're building a place in the Jahannam. So therefore, brother, for reaching any good means, you never have to adopt wrong means. You have to go as the guidance of the Quran and the Sunnah. Hope that answers the question. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. تو یہ ویڈیو کلپ آپ لوگوں نے دیکھ لی. تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر ہم غلطی سے کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے اپنی رحمت سے ہمیں وہ کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے تو وہ گناہ جو ہے معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم جان بوجھ کے کوئی گناہ سرزد انجام دیتے ہیں, کوئی گناہ ہم سے ہو جاتا ہے اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے, تو بھائی اس کے اوپر پکڑ ہے اور اس کا ایک ہی علاج ہے, ہمیں توبہ کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے بچائے. تو سیئنگ میری کرسمس از ٹوٹلی حرام ان اسلام. سو میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے کسی 25 جو دسمبر آنے والا ہے, اس میں کوئی کسی طریقے کا مطلب آپ لوگ کسی بھی کے ساتھ بھی کوئی سٹیٹس رکھتے ہیں یا کچھ کسی کو وش کرتے ہیں تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ سب لوگ جو ہے گناہوں سے بچیں. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو پہ لائک کر دینا, شیئر کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ. باقی وسلام.